then the resultant r is equal to root over magnitude of the square of the magnitude a square of the plus square of the magnitude b plus 2 into magnitude of a and magnitude of b cosine angle between them, and tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. So now we will discuss about the parallelogram law of vector addition, its statement, its graphical diagram and its derivation. So comparing, then we will compare what is the difference between triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition, and discuss about when theta equal to 0, theta equal to 90 degree, theta equal to 180. Now let us write down parallelogram law of vector addition. After statement लिखते हैं, this law states that okay, if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram taken as drawn from a point, then the resultant is represented by in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point okay. So diagram ड्रॉ हो गया. तो A वेक्टर B वेक्टर, तो कौन बोली थोड़े सामांतरिक चित्र. This is A vector, this is B vector, then resultant will be this vector, diagonal of the parallelogram. This is A, मतलब कि देखो पहले A vector B टा को हम parallel displace करेंगे. This is B, then
this vector A से A को parallel displace करेगी. So then this is the diagonal. So this diagonal will give the resultant of the R is equal to A plus B. Okay, this is A, this is B, this is also B. So this is सामुद्रिक क्षेत्र O P Q S. कहीं देखो इटे A थिला स्टेटमेंट फास्ट पढ़ो. If two vectors can be represented in magnitude and direction, इटे दीटा वेक्टर अछि तो तार magnitude direction अछि. जेमिति ट्रायंगल रे हमें दीटा वेक्टर को कोन होतले open side taken as same order, so the third side or closed side will give the resultant taken as opposite order. So R is equal to केते आस्ला R is equal to A plus B आस्ला नहीं. So similarly कोन हो जाएगा this law states that if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides to adjacent side. So सामुद्रिक क्षेत्र एटा सामुद्रिक क्षेत्र दीटा विपरीत भाव परस्पर समान आ कर्णटा कोणर समद्विखंडक. तो एटा हो सामुद्रिक क्षेत्र. Two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point गोटे पॉइंट रो ड्रा कराइछ. Then the resultant is represented. So resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. Okay. So here OPQS is the parallelogram. Now this is the graphical method for representation of the resultant. Now we will derive the resultant and direction. Okay, this is the resultant, this is direction. So we calculate. So derivation. So consider triangular geometry. Consider two vectors A and B having both magnitude and direction. Having both magnitude and direction. Having both magnitude and direction are represented by the two adjacent sides
sides of a parallelogram OPQS such that OP is equal to A, PQ is equal to B, OQ is equal to R. OQ is equal to resultant of A and B, that is R. ହେଲା सो ଏଠି ଦେଖ स्टेटमेंट अनुसार ए बी दिटा एडजेसेंट साइड सो ए बी हम बनली दिटा एडजेसेंट साइड सो डायगोनल टा देला तमरो रिजल्ट तो एटा को बोली हम बी वेक्टर टा को एडी डिस्प्लेस करेली ए वेक्टर टा को एडी डिस्प्लेस करेली सो देयर इज नो चेंज देन थीटा इज इक्वल टू एंगल between A and B. Theta is equal to angle between A and B. A how we use this angle as theta, eta model, so theta. Okay, so alpha is angle made by resultant with respect to A. Okay, next draw perpendicular QT to the increase of OP at point T such that QT लंब PT. ओके सो दादा डायग्राम रे हम ड्रा करले सो मोइटे सब लिख दे ओके तो सेटा जेमति ट्रायंगल एटा ट्रायंगल ला देखो पूराटा ट्रायंगल ला तो ट्रायंगल ला जेमति दीटा ट्रायंगल लेके हम प्रूव करले सिमिलरली एटा प्रूव करी So in the right angle triangle, बड़टा नेबा ODQ corner square OQ square is equal to only be OT square plus QT square OT is equal to OP plus PT square plus QT square. So it is A plus B whole square papa OA square plus B square plus 2 OP into PT 2AB plus QT square. So it is OP square plus PT square plus QT square. PT square plus QT square plus 2 OP into PT. So देखो PT square plus QT square in the right angle triangle. कोटा PTQ PT के वाले भी PQ square is equal to PT square plus QT square. So PT square plus QT square बदला है हम PQ square लिखें OP square plus PQ square plus 2 OP into PT. Okay, so OP अच्छी PQ अच्छी 2 into OP. So हम PT टा को in terms of PQ करेंगे. So ये triangle का निकालने भी cos theta is equal to PTQ रे cos theta is equal कितने PT by PQ. So PT is equal कितने PQ cos theta.
PT बदल देले कि PQ cos थीटा सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू केते लिखली OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP सो PT बदल देले केते लिखली PQ cos थीटा सो PQ cos थीटा सो ये वैल्यू होगा OQ बोले r देखो से r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b cos theta so r is equal to how much root over a square plus b square plus 2ab cos theta so this is the magnitude of the resultant so this is magnitude of the resultant so magnitude of the resultant. Now we will calculate the direction. Similar triangle of so tan alpha in the right angle triangle OTQ rate tan alpha is equal to QT divided by OT. So QT divided by OT बोल लेते हैं OP plus PT. So QT कितना में बाहर हो गया? So QT बोल के sin थीटा हो गया. So sin थीटा is equal to QT by PQ. So QT बोल लेते हैं PQ sin थीटा. So QT is equal to B sin थीटा. OP बोल लेते हैं A. OP बोल लेते हैं A का मैग्नीट्यूड. PT बोल लेते हैं PQ cos थीटा और B cos थीटा એટલે કે B cos थीटा कौन होला PT is equal to PQ cos थीटा और PT is equal to कितने B cos थीटा तो पापा so tan alpha is equal to QT B sin थीटा by A plus B cos थीटा so alpha is equal to tan inverse B sin theta by A plus B cos theta. So this is the direction of the result. So direction of the resultant. That is the direction of the result. हमें जेमिति ट्रायंगल रो प्रूव करथिला तो सिमिलरली हमर कोन आछला पैरेललोग्राम रो रे but triangle or definition what होतला if two vectors can be represented in both magnitude and direction in the open side of the triangle open sides of the triangle taken in same order then the resultant can be represented in magnitude and direction in the closed side of the triangle taken in opposite order एमिति होतला A अछि so B अछि resultant कोन होतला so R is equal to होतला A plus B ओके सेठी कोन आछला R is equal to सेठी भी R is equal कोन आछला A square plus B square plus 2AB cos theta आछला एठी भी cos सेठी tan alpha कोन आछला सेम आछला B sin theta by A plus B cos theta एठी भी सेठी आछला it is same but treatment वाला diagram होगा so whether it is triangle or parallelogram law resultant is same direction is also same treatment different so now we will discuss about because the resultant depends upon the square of the magnitude A square of the magnitude B and the cosine angle between them similarly the direction alpha also depends upon angle theta between two vectors so we will calculate what is the resultant when theta equal to 0 between अर्थात theta equal to 0 means if the angle between two vectors is 0 if theta equal to 90 degree angle between two vectors is 90 degree if theta equal to 180 degree then the angle between two vectors is 190 degree then what happens in case of resultant we will calculate
2ab cos theta. So if theta equal to 0, so r equal to a square plus b square plus 2ab cos 0. So cos 0 will be 1 a square plus b square plus 2ab. So this is nothing but a plus b the whole square. So it is particular. So r is equal to a plus b. So the theta vector magnitude अच्छी, so theta का same direction रो अच्छी, इमिडी अच्छी और ताकि इमिडी भी लिख परिया a, so this is b, okay, so theta करो रिजल्टेंट के नॉर्मल theta करो magnitude को ऐड कर दो direction को पढ़े, जो direction में theta का अच्छी, so direction को पढ़े पे right, तो इमिडी अच्छी so theta करके r equal to a plus b magnitude direction from upward एपटे rightward but due to east due to north तो डाल करो बुझी वाला नहीं theta इधर एंगल लेते रे 0 डिग्री काहे कि गोटे ऊपर आउट अछि ओके so case 2 if theta equal to 90 degree so r equal to root over a square plus b square plus 2ab cos 90. So cos 90 0. So r equal to root over a square plus b square. Okay, resultant कितना हो a square plus b square. a रो magnitude square plus b रो magnitude रो root over. तो मन करो direction टा कितना है तो tan alpha equal to कितना है b sin theta divided by a plus b cos theta. तो sin 91 cos 90 0. So a term टा 0 होला a term टा 1 होला. So tan alpha equal to b रो magnitude divided by a रो magnitude alpha is equal to tan inverse b by a. कौन लिखा देखो कते कितने रहउची स्लोप theta vector कौन अछि this is a अछि this is b अछि theta भीतर एंगल केते 90 डिग्री. So resultant था कितना हो resultant r equal to कितना हो root over a square plus b square और डायरेक्शन था b by a लोग ना स्लोप b by a means origin देई दिबो ओके मानर एग्जांपल ले सो थीटा वेक्टर अछि गोटे होची f1 3 न्यूटन f2 होची 4 न्यूटन सो रिजल्टेंट थीटा भीतर एंगल 90 डिग्री सो रिजल्टेंट ता को पठाओ resultant r is equal to root over 3 रो स्क्वायर plus 4 रो स्क्वायर is equal to 25 so 5 so resultant ना 5 न्यूटन को डायरेक्शन रे so in direction रो okay then if theta equal to 180 degree so r is equal to क्या होगा root over a square plus b square plus 2ab cos से so cos से 1 a square plus b square minus 2ab so r is equal to a minus b रो whole square so এটা কতলা r is equal to a minus b ओके a रो b ফেড অর্থাৎ বড়টার ছোটটা ফিল্ড কার direction is along bigger vector border direction हो bigger vector एग्जांपल ले लेबा मन करो गोटे वेक्टर a अछि 5 मीटर पर सेकंड आ गोटे वेक्टर b अछि एटा 180 डिग्री एंगलटा सो 3 मीटर पर सेकंड सो डायरेक्शन रिजल्टेंट कितना हो ना 5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड रुके तला 2 मीटर पर सेकंड को डायरेक्शन रहयो border डायरेक्शन रहयो मींस border डायरेक्शन को पड़ अछि एपड़ अछि सो r इक्वल टू कितना हो 2 मीटर पर सेकंड towards right मन राइट अछि गोटे वेक्टर अछि 5 न्यूटन आ गोटे वेक्टर अछि मनर एटा होते f1 वेक्टर f2 वेक्टर अछि मनर 3 न्यूटन हला तो देखो दीटा भीतर एंगल 180 डिग्री सो कितना हो
বড়টার ছোটটা সো f is equal to f1 minus f2 বড়টার ছোটটা 5 নিউটন minus 3 নিউটন তো কেতে হবে 2 নিউটন সো 2 নিউটন অপওয়ার্ড হবে না ডাউনওয়ার্ড হবে ডাউনওয়ার্ড হবে কারণ বড়টার ডাইরেকশন সো f is equal to 2 নিউটন ডাউনওয়ার্ড okay so this is theta equal to 0 theta equal to 90 degree theta equal to 180 so now if magnitude of a is equal to magnitude of b जदि दीटा का magnitude सेम अछि तो कोन हो if magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to let a रा magnitude जहां b रा magnitude से नु लिखे तो a रा magnitude तो r इक्वल टू root over a square plus b square plus 2ab plus theta so the theta equal to 0 if theta equal to 0 degree r is equal to a plus b तो r is equal to a रा magnitude जहां b रा magnitude जहां a plus a 2a direction same in the if theta equal to 90 degree so r is equal to root over a square plus a square so कहता है 2a square so root 2a direction same जब दी के होतला मनोर एटा a अछि एटा a अछि एटा 90 डिग्री अछि so resultant कहता है root 2a okay if theta equal to 180 degree so r is equal to a minus b so এটা কোন হলো a minus a so 0 that is null vector okay so next class we will discuss about some numericals about vector addition and polygon law of vector addition okay so thank you good afternoon